Welcome back to English Wala channel, and today we are going to study a poem from Hornbill, a textbook, class 11. The name of the poem is A Photograph, and it is composed by Shirley Toulson. When we will study this poem, we will find that this poem states three stages in three stanzas. In the first stage, the girlhood of the poet's mother is described, and this is the period when the poet was not born. This period describes the thing before the birth of the poet. In the second stage, it refers to the poet's mother's middle ages, and this is the period when the poet was a child. And then in the third stage, that refers to the period after the death of the poet's mother. The photograph revived the nostalgic feeling in the poet. So प्यारे बच्चों, जब हम ये पोएम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो है लाइफ के थ्री फेजेस को इंगित करता है ये पोएम। फर्स्ट फेज में हम देखते हैं कि गर्ल्सहुड ऑफ द पोएट्स मदर, पोएट्स की मदर का बचपना हम देखते हैं। दैट टाइम शी वाज ओनली 12 years old, एंड इस समय जो है पोएट का बर्थ भी नहीं हुआ था। जब सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो है पोएट के मदर का मिडिल एज जो है वो दर्शाया गया है, और ये वो पीरियड है जब पोएट टुल्सन जो है एक बच्ची थी। थर्ड स्टेज जो है वो पोएट्स के मदर के डेथ से रिलेटेड है, और आफ्टर द डेथ ऑफ पोएट्स मदर इट रिफर्स, ये जो है पोएट के मदर के डेथ के बाद का पीरियड है, जब फोटोग्राफ को देखकर जो है पोएट उसके बारे में सोचती है। फोटोग्राफ रिवाइव करता है उनके नॉस्टैल्जिक फीलिंग को। तो आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं पोएम पे। अभी जो आपके पास स्लाइड दिख रहा है, इस स्लाइड में को जो है दो पार्ट में किया गया है। एक पार्ट में जो है वो पोएम डिस्क्राइब है, और दूसरे तरफ जो है उसका सिंप्लीफिकेशन है, दैट इज paraphrase. So come to the stanza of the poem. This is the very first stanza of the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient fit. In this stanza, the poet describes about a photograph. The poet looks at the cardboard frame of the old photograph. The photograph showed two girl cousins holding the hand of the poet's mother. They had been there for a sea bath. इसमें देखते हैं कि इसके कार्डबोर्ड पे जो है एक फोटो लगा हुआ है, उसको पोएट देखती है, और उस फोटो में वो देखती है कि उसके मदर की टू कजिन्स जो हैं वो उसके मदर का हाथ पकड़े हैं, और वे लोग जो है वो सी बाथ के लिए समुद्र के किनारे हैं। आउट ऑफ दीज थ्री द पोएट्स मदर वाज द बिगेस्ट गर्ल। पोएट की मदर सबसे बड़ी लड़की थी उन तीनों में से। सी वाज अराउंड 12 साल की वो थी, और ऑल वेयर स्टैंडिंग एट द बीच, सभी जो है एक समुद्री बीच पर खड़े हैं तीनों ही।
हर अंकल हैड ए कैमरा, वहां पे उसके अंकल भी हैं जो फोटोग्राफ में दिखते नहीं हैं, बिकॉज ही वॉज द मैन बिहाइंड द कैमरा हु टुक द फोटोग्राफ. एंड ऑल दीज थ्री गर्ल्स स्टूड देयर facing towards the camera. They pushed their hair to smile. That was the time when the poet was not born even. ये उस समय की बात है जब पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था. At that time her mother's face was sweet, attractive. उस समय उसकी माँ काफी अट्रैक्टिव दिखती थी, काफी ब्यूटीफुल दिखती थी, उसके चेहरे पर काफी ग्लेज था. She was standing at the beach. The sea has not changed much. वो एक बीच पे खड़ी है और पोएट का मानना है कि समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. The poet's mother along with her two cousins was standing on the beach and the sea was washing their mortal feet. वहां पे पोएट की मदर और उसकी दो जो कजिन्स हैं वो सी बीच पे खड़ी हैं और सी जो है उसके मॉर्टल फिट को, ट्रांजिएंट फिट को वॉश कर रहा है. When we proceed towards the next stanza of the poem, see what the poet says here. जब दूसरे स्टैंजा पे बढ़ते हैं हम देखेंगे कि पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहती है. Some 20-30 years later, she would laugh at this snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the levered ease of loss. So, this stanza describes the time lapse of 20 to 30 years. 20 to 30 years have passed since the photograph has been depicted, since the photograph has been snapped or taken. Now, whenever her mother looked at the photograph, अब जब उस फोटोग्राफ को 20-30 साल बाद जब उसकी मदर उसको देखती है तो वो हंस पड़ती है. She would laugh. She would point out to Betty and Dolly. Betty और Dolly को point करते हुए वो कहती है कि how they were dressed up for the sea holiday, कि कैसे उनको तैयार कराया गया था sea holiday के लिए. And that sea holiday has become a thing of past for her mother also, because that had occurred almost 20-30 years before, which the photograph has captured, had become her own past. कहता है कि वो पोएट के मदर के लिए भी पास्ट थिंग है, क्योंकि वो 20-30 साल पहले उस फोटोग्राफ को कैप्चर किया गया था और उस समय जो उसके पोएट की मदर की स्थिति थी वो काफी ब्यूटीफुल थी. उसके चेहरे पे एक दूसरी चमक थी. जो ग्लेज उस समय था वो अब नहीं है. Both of them suffered from a sense of loss. Ironically, both of them were laboring to ease the loss. कहता है कि दोनों ही जो है वो सफर कर रहे हैं सेंस ऑफ लॉस से. सेंस ऑफ लॉस मीन्स हियर कि आफ्टर द पासिंग ऑफ टाइम द ग्लेज ऑन द फेस हैज डिसअपीयर्ड. जो समय बीतता गया है और समय बीतने के बाद जो है उसके चेहरे जो है में बदलाव ज्यादा आया है, उसमें जो चेंजेस आए हैं उसके लिए है. और दोनों ही जो है कठिन परिश्रम करते हैं, काफी वो जो है स्ट्रेन लेते हैं, लेबर्ड कहते हैं, टू ईज द लॉस, टू ईज द लॉस वट एवर हैज बिन लॉस्ट. Come to the third paragraph. What is here in the third stanza? Poet ने तीसरे stanza में क्या कहा है? Now she has been dead nearly so many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences.
The poet says about her mother now who is no more. पोएट अपनी माँ के बारे में कहती है और अब उसकी माँ जो है वो जीवित नहीं है. She has been dead nearly as many years as she lived. उतने ही साल उसको मरे हुए हो गए जितना साल वो जिंदा थी. She has nothing to say about the circumstances. पोएट के पास अब शब्द नहीं है. She has no word to express the circumstances of the death of her mother or about the situation captured in the photograph. अब उसके पास शब्द ही नहीं है. She lacks the words to describe the two circumstances, one of the death of her mother and other the situation captured in the photograph. She mentions, वो कहना चाहती है कि अब उसके पास कोई शब्द नहीं है उस सिचुएशन को, उस स्थिति को वर्णन करने के लिए जो फोटोग्राफ में कैप्चर्ड था और एक उसकी माँ के डेथ से रिलेटेड था. She mentions silence only brings out deeper silence. पोएट के कहने का मतलब है कि चुप्पी जो है वो और बड़ा साइलेंस की ओर हमको ले जाता है. That makes thing mysterious. और वो किसी भी चीज को रहस्यमयी बना देती है. See, this slide deals with the difficult words. On the left hand, difficult words have been selected from the poem. Poem से कुछ difficult words लिए गए हैं और दूसरी ओर जो है उसका meaning दिया गया है. This is for your ready reference. ये आपके reference के लिए है. You can go through the dictionary and examine it also. Now the last and the most valuable tips for this, because these are the things you may go for the very first time. The poetic devices used in the poem photograph. So what are the poetic devices? क्या क्या poetic devices हैं जो इस poem में प्रयुक्त हुआ है poet के द्वारा? तो सबसे पहला जो है वो alliteration है और alliteration कहते हैं the occurrence of same letter or sound at the beginning of the adjacent or closely connected words. Alliteration उसको कहते हैं जब same letter या same sound जो है शब्दों के beginning में, जो दो तीन शब्द एडजेसेंट शब्द हैं एक के बाद दूसरा, जो क्लोजली कनेक्टेड है वर्ड्स हैं, उसके पहले साउंड जो है वो पहला लेटर जो है अगर वो सेम साउंड प्रोड्यूस करता है तो दैट साउंड इज called alliteration here. So the sound is usually a consonant and words don't have to be right next to one. Words जो है वो एक दूसरे से थोड़े दूरी पर हो सकता है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं हो सकता है. जैसे हम पहला उदाहरण इसमें देखते हैं कि stood still to smile. See the letter S in stood, still and smile. So stood followed by still, but still और smile के बीच में एक letter है to, so that is why it was described that closely connected words. In the next example, terribly, transient. The T in terribly, T in transient, the T sound. And silence, silences. S in silence and S in silences. So all these three examples are mentioned under alliteration. That is the occurrence of the same letter of same sound. अगर किसी वाक्य में कई शब्दों के पहला जो लेटर है या एडजेसेंट शब्दों का पहला लेटर है, अगर वो एक ही हो तो उसको alliteration कहते हैं. Second is transferred epithet. Transferred epithet कहते हैं when an adjective is used usually to describe one thing
is transferred to other. जब एक एडजेक्टिव को जिसको यूज करते हैं अगर वो दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है तब उसको जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं. जैसे वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट. हेयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट. ट्रांजिएंट फिट. Transient fit is not transient. Actually, the life of a human being is transient. So, transient refers to the life, not to the fit. But here it is written. So, that is why terribly transient fit comes under transferred epithet. So, the next one is oxymoron. Oxymoron is also called विरोधा अलंकार in हिंदी. इसको हिंदी में विरोध अलंकार कहते हैं. और इसमें जो है एक शब्द दूसरे से कंप्लीट अपोजिट होता है लेकिन वो दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं. जैसा कि आपने कहीं देखा होगा शब्दों को deafening silence. If the silence is there, what is deafening? Deafening means loud, silence means sound. But these two words usually when used combinedly as deafening silence, then it is the example of oxymoron. Here see the words labored, ease. Labored, that is strainful, and ease, that is too easy. Labored का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट जो है, बट ईज का मतलब जो है काफी इजी होता है. ये दो शब्द जो है एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हैं लेकिन इसका साथ में प्रयोग हुआ है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन. सबसे अंतिम जो है वो पर्सोनिफिकेशन है. इट्स साइलेंस, silences. All these examples are taken from the poem. So silence, it's silence, silences. Personification कहते हैं मानवीय करण को. मानवीय अलंकार होता है, मानवीय करण अलंकार होता है. किसी भी निर्जीव चीज को अगर हम सजीव के रूप में दिखाते हैं, अगर उसको ह्यूमन बीइंग के रूप में रिफर करते हैं, ह्यूमनाइजेशन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड personification. So here silence is personified. Silence is personified. So dear students, on poetic devices, I am planning for a separate video where you can only study about these poetic devices and some more poetic devices. So this is the end of this lesson. Like a Hellcat.